Hello everyone, welcome to the Heroes Initiative powered by IPCA. These heroes are instrumental in improving quality of life of the patients. Today we have one such hero who has improved life of tens and thousands of such patients. Doctor, we welcome you to the Heroes Initiative by IPCA. So doctor, now we are focusing on cataract surgery pre and post-operative care. So doctor, my first question for you is, what should I expect during the pre-operative assessment for cataract surgery? Are there any specific preparation do I need to make, doctor? Pre-operative assessment, first of all I would like to say कि pre-operative assessment मतलब कि ऑपरेशन से पहले हम क्या-क्या प्रोसीजर करने वाले हैं. So ऑपरेशन से पहले it's a big list of things that we have to do as a cataract surgeon. पहले ज़माने में क्या होता था कि आपने जो कैटरैक्ट मतलब क्या है कि हमारा लेंस जो है, आपका कैमरे का लेंस जो है वो ख़राब हो गया है, शीशा हमारा ख़राब हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है. सिमिलरली अगर आँख में जो लेंस है उस लेंस में अगर वो क्लाउडी हो गया है, वाइट हो गया है, गंदा हो गया है तो हम भी उसे रिप्लेस करते हैं बाय कैटरैक्ट सर्जरी. उसके लिए पहले क्या करते थे, वो लेंस को निकाला और दूसरा लेंस डाल दिया. बट नाउ कैटरैक्ट सर्जरी ऐसा नहीं रहा है. विद एडवांसमेंट्स कैटरैक्ट सर्जरी हैज बिकम अ रिफ्रैक्टिव cataract surgery. मतलब we try to do a surgery in such a way that post operatively you do not have any glasses, you do not need any glasses. So for that हम लोगों को एक बहुत सारी investigations करनी पड़ती हैं. And in these investigation हम आपकी आँख की विजन टेस्ट करते हैं, आँख का प्रेशर टेस्ट करते हैं, आँख का पर्दा टेस्ट करते हैं, आँख की नस टेस्ट करते हैं. इन सब के बाद आप ये चेक करते हैं कि आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन तो नहीं है. फिर हम ये भी चेक करते हैं कि आपको और कौन कौन से मेडिकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे ऑपरेशन के दौरान कुछ मेडिकेशंस हमको रोकनी पड़ती हैं. हम फिर आँख में जो डलने वाला लेंस है उसका हम लोग टेस्ट करते हैं, उसको हम ए स्कैन कहते हैं. Nowadays I am using artificial intelligence also which help in lens power calculation. So artificial intelligence का भी क्या कहते हैं रोल आ गया है in cataract surgery. So these are all the investigations that we are doing before cataract surgery so that हमारी cataract surgery एक perfect surgery हो and post operatively operation के बाद आपकी आई में बहुत अच्छी रोशनी. Agreed, doctor, what you said. Are there any common complications after cataract surgery and how they can be managed or prevented? So these days cataract surgery have become very advanced surgeries and usually we do not have any complications. 99% of the cataract surgeries they are safe and they are without complications. So but still there are chances of complications because any intervention in body can lead to complication. So we cannot avoid a complication free surgery. It's not possible. So for that there are the common problems that we are having after cataract surgeries. First and foremost is the dry eye. Most of the time after cataract surgery the people are complaining that थोड़ा सा itching हो रहा है, थोड़ा सा redness हो रहा है and ये itching is mostly because of dryness post operatively. So we use lubricating eye drops and उससे we cure these symptoms. Similarly थोड़ा सा during a surgery आँख में redness हो जाती है and redness is also very little and this redness can also be cured. कभी-कभी corneal edema है and there are other complications that can happen, but these are not very common complications that are occurring these days now. So cataract is relatively a safe procedure and we should not fear getting a cataract surgery done. So doctor, your expertise and insights on cataract surgery pre and post operative care are invaluable to this initiative and we believe your participation will greatly benefit the patients.